Hi, good morning students. In my previous lecture on CPC, we were on the supplemental proceedings part 6 of CPC. We have seen that the object of supplemental proceedings was given in section 94 itself. The very beginning of the section tells us the object of supplemental proceedings. If I go back to section 94, in order to prevent the ends of justice from being defeated, this was the basic object of supplemental proceedings. Now we have seen that there were 5 clauses for supplemental proceedings which may be taken up during the course of a trial, and the first was the arrest warrant and then the attachment of property. We saw that supplemental proceedings, there are 2 types of parallel proceedings. One could be incidental proceedings and the other could be supplemental proceedings. The incidental proceedings we dealt with from sections 75 to 78, part 3 of CPC, in which we dealt with the entire law of commissions. Order 26 was dealing with the entire law of some commissions, and we saw various aspects of which commissions could be sent. That we saw with respect to section 75. When we came to supplemental proceedings, clause A and B were dealt with in order 38. We saw all the aspects of arrest and all the aspects of attachment in my previous lecture. Clause C now deals with a very, very important topic. This is one question which I have seen coming again and again in mains, prelims, as well as in the interview, which is the topic of temporary injunctions. Clause C of section 94 deals with temporary injunctions. As I told you, this is one question which I always expect in exams. We first go to clause C and then we go to the corresponding order. The first we go to section 94, clause C. In order to prevent the ends of justice from being defeated, the court may grant a temporary injunction, and in case of disobedience, commit the person guilty thereof to the civil prison, and order that his property be attached and sold. What is an injunction? Injunction is a ban. It's a prohibition. It's a restriction. It's an embargo. Injunction is a judicial process. If I was to define injunction, I would quote the Black's Law Dictionary for this. An injunction is a judicial remedy prohibiting persons from doing a specified act. Such injunctions are restrictive injunctions. An injunction is a judicial remedy prohibiting persons from doing a specified act. Such injunctions are restrictive injunctions. Restrictive injunctions को मतलब है जिसको हम कहेंगे स्टे. इट्स अ स्टे ऑर्डर. रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है? मत करो. सो पहले टाइप के इंजंक्शंस होते हैं जो हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ इंजंक्शंस, यानी कि मत करो. दूसरे टाइप के इंजंक्शंस होते हैं which command a person or a party to undo some wrong or injury. To undo some wrong or injury. जो आपने किया है वो ठीक करो. ठीक करो. Mandatory injunctions. तो 2 टाइप के हम मोटा हम बात कर सकते हैं इंजंक्शंस की. एक है मत करो और एक है ठीक करो. सो मत करो रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस, ठीक करो मैंडेटरी इंजंक्शंस.
रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस को हम प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस भी कहते हैं, प्रिवेंटिव इंजंक्शंस भी कहते हैं. So I hope I'm clear on both these aspects, that two types of injunctions are there. Injunctions फिर दो तरह के हो सकते हैं. अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो दो तरह की हैं, रेमेडीज की बात करें तो दो तरह की हैं. पहला टेम्परेरी, या जिसको हम कह सकते हैं इंटरिम, इंटरलॉक्यूटरी, सो टेम्परेरी इंजंक्शंस, और दूसरे परमानेंट इंजंक्शंस. टेम्परेरी इंजंक्शंस are the subject matter of CPC. Permanent injunctions is a relief, is a claim which can be the subject matter of a suit. Permanent injunctions are the realm of Specific Relief Act. Permanent injunction is an injunction which I am asking for a stay or for a undoing or wrong permanently. तो जब मैं कहता हूं कि मुझे परमानेंट इंजंक्शन चाहिए, वो एक हमेशा के लिए राइट मिलना है, वो एक डिक्री के रूप में आएगा. सो प्लीज रिमेंबर, परमानेंट इंजंक्शन मे बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ डिक्री. I may have sued the defendant for a permanent injunction. उसको हमेशा के लिए restrict कर दो. ये मेरी डिक्री का सब्जेक्ट मैटर बन सकता है. जो टेम्परेरी इंजंक्शंस हैं, they are now covered by Order 39, Rule 1, Rule 2. जब हम परमानेंट इंजंक्शन की बात करते हैं, अगर कोई परमानेंट इंजंक्शन किसी पार्टी के खिलाफ पास हो गया, then that party is thereby restrained forever from doing the act which has been complained of. That is why a perpetual decree, a perpetual injunction can only come in the form of a decree. It is determination of a right perpetually. Whether a perpetual injunction has to be given or not depends upon the merits of the case, which have to be adjudicated during the course of a trial. On the other hand, a temporary injunction, an interim injunction, is of an interlocutory nature. It may be granted at any stage of the suit. Why do we call it temporary? Because it exists only till the suit is in progress. With the judgment coming in, with the decree coming in, the temporary injunction ceases, because now the rights have been determined. Why are temporary injunctions given? We have seen already section 94 की first words. अगर हम इंजंक्शन वैसे ही ले लें, इंजंक्शन मत करो या ठीक करो, हर इंजंक्शन का बेस क्या है? What is the basis of an injunction? Equity, justice. These are the bases of an injunction.
बट एक बेसिक चीज है, अगर आप मुझे परमानेंट रिलीफ नहीं दे सकते, अगर आप परपेचुअल इंजंक्शन नहीं दे सकते, अगर आप परमानेंट इंजंक्शन नहीं दे सकते, तो फिर आप अगर मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन देते हो तो ये तो गलत है। जो चीज दे ही नहीं सकते उसका टेम्परेरी भी क्यों दो? सो एक बेसिक चीज निकल के आती है कि इंजंक्शन का बेस ही जो है वो है इक्विटी, जस्टिस। जिस कमरे के अंदर आपने जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों दें हम? सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर परपेचुअल इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता तो फिर टेम्परेरी इंजंक्शन किस मुंह से दोगे? सो प्लीज राइट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। The basic aspect that a court must keep in mind is that injunctions are based on equity, on the principle of equity and justice. Hence, if a court cannot grant perpetual relief or a perpetual injunction, then it has no powers to give interim injunction or temporary injunction. We must remember one very important thing. Temporary injunctions are not given on the basis of merits of the case. मेरिट्स अभी आपने डिसाइड करने, एडजुडिकेट करने हैं. फर्स्ट यू हैव टू एडजुडिकेट, देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन. टेम्पररी इंजंक्शन देने का मकसद होता है स्टेटस क्यो मेंटेन करो, जैसे थे मेंटेन करो. प्लेंटिफ के राइट्स जो मिलने हैं उसको डिक्री में वो पहले खत्म नहीं करने. अगर मुझे प्राइमा फेशी पता चल रहा है कि डिफेंडेंट प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, भागने वाला है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने पे रोक लगा दूंगा. हो सकता है बाद में प्लेंटिफ हार जाए, कुड बी. तो टेम्पररी इंजंक्शन का जो बेसिस है, इट इज नॉट दैट इट इज बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, इट इज बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द सिचुएशन. सिचुएशन ये है कि अगर हमने इमीडिएटली इंजंक्शन ना दिया, जब तक सूट चल रहा है तब तक डिक्री का जो फ्रूट है वो खत्म हो जाएगा. एक ऐसा अन्याय हो जाएगा जो ठीक नहीं किया जा सकता. So please remember the basis of an interlocutory order, the basis of an interim injunction is not necessarily merits of the case. It is the exigency of the situation. It is the need of the hour. It is the need to protect status quo. It is the need that the plaintiff, even if he wins the case and gets a decree in his favor, must be able to realize his claim in the form of his relief.
Wherever we find that his claim or his relief, if it is granted tomorrow upon adjudication of merits of the case, may not be available to him because of some hanky-panky being committed by the defendant. It is in the interest of justice that without ascertaining the true merits of the case, we protect the rights of the party. Temporary injunctions are more in the nature of protection. Permanent injunctions give rights. Temporary injunction protect those rights during the course of a trial. I'd like to quote two Supreme Court judgments on this. I have P. Govind Swami versus S. Narayanan. P. Govind Swami versus S. Narayanan, 1987 Supreme Court. And I also have Jai Kishan versus Britonatics, Britonatics. Jai Kishan versus Britonatics, 1987 Supreme Court. Quickly write down, please. In all interlocutory proceedings, the court can only express its tentative view. The passing of an interim order in favor of the plaintiff, for example, an interim injunction, is only for a limited purpose of securing the interest of the plaintiff, and it shall not be implied as being a finding on the merits of the matter, nor shall it be construed that the temporary order is passed because the court has taken any view with regards to merits. So please remember, temporary injunctions are not any pointer to the fact that the court has decided this on merits, that merely because a temporary injunction was granted, half the battle is won. No. Even if a temporary injunction is granted, a decree may be passed against you. A temporary injunction is not granted on merits of the case. As I said earlier, temporary injunctions are granted on the basis of exigencies. Basically, to secure the interest of the plaintiff. एक बार एक केस आया था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मच्छादो ब्रदर्स. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस मच्छादो, MACHADO, मच्छादो ब्रदर्स, 2004 सुप्रीम कोर्ट, 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये. इसमें यही चीज आई कि जी इंटरिम इंजंक्शन तो मुझे फेवर में मिल गया था, तो जी मेरा केस तो डिसाइड ऑलमोस्ट हो चुका है. Merely because an interim injunction was given to me earlier, was passed in my favor, my battle is already half won. The Supreme Court held again in this Shipping Corporation of India case
interim injunctions do not determine the future of the case. Interim injunction is in the title of supplementary proceedings, not incidental proceedings. They have no bearing on the future of the case, or for that matter, on the judgment of a case. I hope I am clear on this extremely important matter. Now the next question arises. Who may make an application for grant of an injunction? Is it only the plaintiff? नहीं, कोई भी पार्टी हो सकती है. प्लेंटिफ भी तो गड़बड़ कर सकता है. So please remember, any party to a suit may apply for grant of an injunction against the adversary. But one thing is important. He must be a party to a suit. A stranger, an alien, is not competent to make such an application. S. Amma, A-M-M-A, S. Amma versus Vijay Amma versus Vijay, V-I-J-A-Y-A, Vijay Amma, 1995, Kerala High Court. Usually it is a plaintiff who applies for grant of injunction against the defendant. However, the defendant is not precluded from making such an application in the interest of justice. In case the interests of defendant are at stake, then even a defendant can make an application for grant of an interim injunction, temporary injunction against the plaintiff. Similarly, against whom can an injunction be issued? Similarly, as far as issuance is concerned, injunctions may be issued against any party. That means injunctions can be applied for by parties, and it has to be issued against a person who is a party. It cannot be issued against a stranger to the case who is not impleaded as a party in the case. Similarly, no injunctions can be issued against a judicial officer. Another important aspect is, as a normal routine, the party against whom an order of injunction is to be passed has a right to be heard on the issue of injunction, unless that it is specifically given in law. As I told you, supplemental proceedings are always purely discretionary power of the court. This discretionary power of the court must be used most judiciously to meet the ends of justice, to maintain status quo till final determination of the matter. This power must be used sparingly and in deserving cases only, and not in a routine manner. I've quoted these lines from Bombay High Court, Municipal Corporation of Bombay versus B. Motilal, 1997, Bombay High Court.
A question arose before the Honorable Supreme Court. Can we put up an anti-suit injunction? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एडीजे की इंटरव्यू में एक बार डिस्कस हुआ है. क्या मैं इंजंक्शन डाल सकता हूं कि इसको सूट डालने से मना किया जाए? क्या मैं एंटी सूट इंजंक्शन डाल सकता हूं? This matter came up before a very famous Supreme Court judgment. Modi Entertainment Network versus WSG Cricket Limited. Modi Entertainment Network versus WSG Cricket Limited, 2003 Supreme Court. The question which came up before the Honorable Supreme Court was, can we restrain a party? Can the court restrain a party from instituting a case in another court, including a foreign court? In other words, can an injunction called an anti-suit injunction, can it be passed? The Honorable Supreme Court laid down principles which will govern this matter and as a rule said, yes, we can. Sometimes suits are being registered only to harass a person, especially in marital affairs. Suits are being registered by dozens just for the matter of harassing a party, where the court is convinced that already a lot of litigations are pending and the party is merely harassing the other party by putting up meaningless litigations. There, the court may pass an anti-suit injunction. The Honorable Supreme Court went on to say that anti-suit injunctions is a species of injunctions. And hence, since this definitely affects the right of a person to move the court, because definitely I have a right to move the civil court in case my civil right is infringed, we are giving certain principles which should govern anti-suit injunctions, and those we are giving in this 2003 Supreme Court judgment of Modi Entertainment Network. Always remember one golden principle. Interlocutory orders are always made in aid of the final order and not vice versa. Interlocutory orders, चाहे वो interim injunction हो, जहां जैसे हम temporary injunction की बात करें, तो वो फाइनल ऑर्डर को पास करने के लिए मददगार होने चाहिए. इट इज नॉट कि फाइनल ऑर्डर्स इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के मदद के लिए बने या फाइनल ऑर्डर्स विल बी डिटरमिन्ड बाय इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स और फाइनल ऑर्डर्स विल बी डिटरमिन्ड बाय एनी सप्लीमेंटल ऑर्डर. फाइनल ऑर्डर ठीक ठाक पास हो जाए, ठीक ठाक उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, प्रिजर्व हो जाए राइट्स, ये बेसिस है एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का, खासकर टेम्पररी इंजंक्शन का. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इंजंक्शंस पे, आई टोल्ड यू, हर साल आ जाता है. एक जो क्वेश्चन बार बार 20 मार्क्स का आ जाता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच विल गवर्न टेम्पररी इंजंक्शंस. कोर्ट को अपने दिमाग में कौन से प्रिंसिपल्स दिमाग में रखने पड़ेंगे व्हाइल डिटर्मिनिंग टेम्पररी इंजंक्शंस. वी हैव ऑन दिस वेरियस जजमेंट्स. लेट्स क्विकली मेक अ कंप्लीट नोट. ये पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वी हैव टू बी केयरफुल.
I would first like to start with the para which I am going to quote from the Honorable Supreme Court. Maria Squa, M-A-R-I-A, Maria Squera, S-E-Q-U-E-I-R-A. Maria Squera versus Erasmo Squera. Erasmo, E-R-A-S-M-O. Maria Squera versus Erasmo, E-R-A-S-M-O. Erasmo Squera, 2012 Supreme Court. I quote, experience has shown that all kinds of pleadings are introduced and even false and fabricated documents are filed in civil cases because there's an inherent profit in continuation of a possession effected by a temporary injunction. In a large number of cases, honest litigants suffer and dishonest litigants get undue benefit by grant or refusal of injunction. Just because the courts do not critically examine the pleadings or documents on record. मारिया स्क्वेरा क्या कहता है 2012 सुप्रीम कोर्ट की एक्सपीरियंस ने हमें बताया है कि प्लीडिंग्स बहुत फर्जी डालते हैं लोग, बहुत सारे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स डालते हैं लोग जस्ट टू गेट अ टेम्परेरी इंजंक्शन. टेम्परेरी इंजंक्शन एक बार मिल गया तो फिर वो सालों साल चलता है. बाद में इवन अगर पार्टी हार भी जाए तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन का बेनिफिट ले लेता है वो फॉर इतने साल जब तक केस चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा हैरासमेंट है दूसरी पार्टी को और बहुत बड़ा अन्याय है. इसीलिए टेम्परेरी इंजंक्शन देने से पहले कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो प्लीडिंग्स को क्रिटिकली एग्जामिन करे, डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व करे और अगर बहुत ज्यादा जरूरत लगे और लगे कि इट इज स्ट्रिक्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तब और तब सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शंस दे. टेम्परेरी इंजंक्शंस भी किसी का पोजेशन रोक देती हैं या दे देती हैं, जो गलत हो सकता है. ऐसा पोजेशन के लिए अगर कोई टेम्परेरी इंजंक्शन है या अगर किसी को बाहर निकालने का टेम्परेरी इंजंक्शन है जिसका एक्चुअल राइट था, तो कोर्ट प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ द पार्टी और जिसको कोई फायदा नहीं होना चाहिए था वो सालों साल फायदा उठाता है. एंड में जब वो हार भी जाता है, a lot of damage has already been done to the rightful party. This is what Maria Squera has clarified. I hope everybody is clear on this. Now the question arises, what are the general principles? What will be the determining factors for a court to decide whether a temporary injunction should be given or not? On this, I would like to quote the Honorable Supreme Court. There are two important judgments. There are many, but I would like to quote two. Bloom Decor Limited. Bloom, B-L-O-O-M, Bloom Decor, D-E-C-O-R. Bloom Decor Limited versus Subhash Himmatlal Desai versus Subhash Himmatlal Desai, 1994 Supreme Court.
And also I have another 1994 judgment, Morgan, M-O-R-G-A-N, Morgan Stanley Mutual Fund versus Kartik Das, 1994, Supreme Court. Three general principles which are considered the very soul of an order to grant injunction. There are three such broadly speaking principles. What are those three broadly speaking principles which should govern an order for injunction? First, whether the plaintiff has a prima facie case. First principle is whether plaintiff has a prima facie case. Second principle is whether balance of convenience is in favor of the plaintiff. Whether balance of convenience is in favor of the plaintiff. Thirdly, whether plaintiff would suffer irreparable injury if his prayer for injunction is disallowed. The third principle, whether plaintiff would suffer irreparable injury if his prayer for injunction is disallowed. A, उसका प्राइमा फेशी केस है कि नहीं, दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसके फेवर में है कि नहीं, और अगर उसको ना दिया तो क्या उसको इररिपेरेबल इंजरी होगी. ये तीन मोटे मोटे जनरल प्रिंसिपल्स हैं. एस गुरुदास वर्सेस रसरंजन, M Gurudas, Gurudas, M Gurudas versus Rasranjan, 2006 Supreme Court. The above mentioned three principles are the governing principles while deciding the grant of a temporary injunction. The same thing was reiterated by the Honorable Supreme Court. Sonu Babu versus Dream Developers, 2009 Supreme Court. Sonu Babu versus Dream Developers, 2009 Supreme Court. K.R. Jadeja versus Maruti Corporation, second judgment. K.R. Jadeja versus Maruti Corporation, 2009 Supreme Court. What is the object of an interim injunction? In the words of the Honorable Supreme Court, Zenit, Z-E-N-I-T, Zenit Metaplast, M-A-T-A-P-L-A-S-T, Zenit Metaplast Private Limited versus State of Maharashtra, 2009 Supreme Court. Zenit Metaplast Private Limited versus State of Maharashtra, 2009 Supreme Court. The object of an interim injunction is to protect the plaintiff against injury by violation of a right for which he cannot be adequately compensated by damages recoverable in an action. अगर किसी टेम्पररी अगर ना देते, अगर जो भी उसका डैमेज हो रहा है, जो भी उसकी इंजरी हो रही है, अगर वो डैमेजेस से रिकवरेबल है तो फिर इंटरिम इंजंक्शन नहीं देना. So please remember, if the violation of his right is adequately, it can be compensated by damages in a further suit or in the same suit also if he wants, then no interim injunction should be passed. Now the question arises, three phrases have been used:
prima facie case, balance of convenience, irreparable loss. ये तीन बेसिक फ्रेजेस हैं इंटरिम इंजंक्शंस को जो गवर्न करते हैं। इनका मतलब क्या है? दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह, दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह, 1993 सुप्रीम कोर्ट। The phrases prima facie case, balance of convenience, and irreparable loss are words of width and elasticity. इसमें बहुत लंबा जुडिशियल डिस्क्रिशन है। दे आर वर्ड्स ऑफ विड्थ एंड इलास्टिसिटी, मीन्स कोर्ट उसको कितना भी खींच के उसको फिट कर सकता है। बट हैविंग सेड दिस, बट दे मस्ट बी हेज्ड, दे मस्ट बी हेज्ड, HEDGED, उस पर एक बाड़ लगानी पड़ेगी। दे मस्ट बी हेज्ड विद अ साउंड एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन to meet the ends of justice. They must be hedged with a sound exercise of judicial discretion to meet the ends of justice. ये तीनों phrases बहुत वाइड हैं, बहुत कुछ हम इसमें खींच के ला सकते हैं, but at the same time दूसरी तरफ का पहलू नहीं भूलना है, दूसरी तरफ की बात नहीं भूलनी है। Judicious discretion होना चाहिए। It should not be a discretion which is arbitrary. अब ये तीनों phrases को हम लेते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। Prima facie case. तो you can make small charts like this. जैसे interim injunction के जो guiding principles हैं, so guiding principles of interim injunction, ये ऐसे बना के अब 3 ले आओ, तीनों बना दो। इधर आ गया आपका पहले प्रिमा फेशी केस, दूसरा आ गया आपका बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, और तीसरा आ गया आपका इररिपेरेबल लॉस। ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स बना दिया करो। अब ऐसी चीजें बहुत सारी किताबों में नहीं है, हमने अपने ये चीजें इवॉल्व की हुई हैं, और इन्हीं से नंबर बहुत आ जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, prima facie case. What do we mean by prima facie case? Like to quote the Delhi High Court on this. Sanjay Tandon versus Sarabjit Singh. Sanjay Tandon versus Sarabjit Singh, 1997 Delhi. It's a DB decision, divisional bench का है ये। A prima facie case implies the probability of the plaintiff to obtain a relief on the material placed before the court. यानी कि जो हमने मटेरियल अपनी प्लीडिंग्स रखी, अपनी प्लेंट रखी या मटेरियल रखा, उसे साफ नजर आता है कि रिलीफ बनता है, कॉज ऑफ एक्शन है। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं बन रहा है, रिलीफ नहीं बन रहा है, तो किस मुंह से आप उसको इंटरिम इंजंक्शन दे रहे हो? So I repeat, a prima facie case involves the probability of the plaintiff to obtain a relief on the material placed before the court. Every piece of evidence produced by either party has to be taken into consideration while deciding the existence of a prima facie case. I would also like to quote Orissa High Court, G. Mishra versus Biraja Devi, Biraja Biraja Devi, G. Mishra versus Biraja Devi, 1999 Orissa High Court. For establishing a prima facie case, it is not necessary for the party
to prove his case to the hilt. एक एक चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है. So for establishing a prima facie case, it is not necessary for the party to prove his case to the hilt. A fair question of determination should be raised to ensure that a prima facie case is established. So mere क्या देखना है, मोटे मोटे क्वेश्चंस डिटर्मिनेशन के देख लो कि केस बनता है कि नहीं बनता. एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, कई बार क्या होता है, प्लेंटिफ प्राइमा फेशी केस नहीं बता पाता, पर वो गरीब होता है, दुखियारा होता है. कोर्ट आउट ऑफ सिंपैथी गिव्स टेम्पररी इंजंक्शंस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है. कोर्ट शुड नॉट गेट स्वेड बाय इमोशंस. टेम्पररी इंजंक्शंस कैन नॉट बी गिवन ऑन द बेस ऑफ इमोशंस. Sympathy, hardship, emotions have no place in law. This matter came up before the Supreme Court. Seema Zahir, Z-A-H-E-E-R, Seema Zahir versus Municipal Corporation of Greater Mumbai. Seema Zahir versus Municipal Corporation of Greater Mumbai, 2006, Supreme Court. In this it was held, sympathy, hardship, emotions, without any prima facie case, cannot be a ground to grant a temporary injunction. So prima facie case क्या होता है? मोटा मोटा पढ़ने से दिख रहा है कि केस बनता है. So जहां मोटा मोटा देखने से लग रहा है कि केस बनता है, क्लेम है, कॉज ऑफ एक्शन है, रिलीफ बनता है, वहां पे ही पहला प्रिंसिपल होगा इंटरिम टेम्पररी इंजंक्शन देने का. सेकंड जो ग्राउंड है हमारा, वो हम लेते हैं इररिपेरेबल इंजरी, इररिपेरेबल लॉस. इररिपेरेबल इंजरी क्या होगी? जो एडिक्वेटली कंपनसेट ना की जा सके. If any injury can be atoned for by damages, then it can be repaired. The injury should be beyond repair. This thing was clarified by Madras High Court. Multi-channel India versus Kavitalya, K-A-V-I-T-A-L-Y-A, Kavitalya Production Limited, 1999, Madras High Court. An irreparable injury means an injury which cannot be adequately remedied or atoned for by damages. It's an injury which cannot be possibly repaired. Orissa High Court has defined irreparable injury. I quote Sanjeev Kumar versus Vishnu Prasad. Sanjeev Kumar versus Vishnu Prasad, 1999, Orissa High Court. It implies a substantial and continuous injury for which there is no standard to ascertain the actual damage likely to be caused. So ये भी एक अच्छी definition है irreparable injury की. It implies a substantial and continuous injury for which there is no standard to ascertain the actual damage linked to the cause, या likely to be caused. Please remember, if an injury can be compensated, that too easily, it is not an irreparable loss. The word irreparable is most important. It cannot be rectified. The damage done will be perpetual.
And that is the reason why we need to give a temporary injunction. Supreme Court gave another dimension to this whole system. They gave what we can call a small fourth principle also. This fourth principle came up in Prabhjot Singh versus Bhagwant Singh. Prabhjot Singh versus Bhagwant Singh, 2009 Supreme Court. The Supreme Court added another dimension to this. They said before passing any order for interim or temporary injunction, if it pertains to public matters, then what will be the interest of the injunction on public interest? So एक और एंगल दिया कि जहां पे मैटर्स कहीं पब्लिक को डील करते हो तो इंजंक्शन देने से पब्लिक इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी ध्यान में रखना है. एक और, जैसा कि मैंने बोला, एक और डायमेंशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने. आई एम कोटिंग मेनी जजमेंट्स टू यू, अलग अलग. समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर. कई बार क्या होता है, बार बार पढ़ने से जजमेंट्स याद हो जाती हैं. जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इंजंक्शन का, जो आते ही आते हैं, ट्राई टू, मैं जान के इतनी सारी दे देता हूं, ना भी याद रहे, एटलीस्ट उसका क्रक्स तो याद रह जाए. एज हेल्ड बाय द ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट, इतना लिख दिया करो, या एज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2009, बस. या एज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन प्रभजोत सिंह, बस. ऐसे पूरी जजमेंट्स याद नहीं होती. सी, मेरा काम है कि मैं आपको पूरा संजीवनी बूटी का पहाड़ दे दूं. I also understand that you can't remember all these judgments. But मेरा काम है आपको पूरा पहाड़ देना, जो आपको सही लगे, याद हो जाए, एक दो भी हो जाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट क्रक्स याद रह जाए. अगर जजमेंट का एक पार्ट, कोई ईयर याद रह जाए, हाई कोर्ट कौन सा याद रह जाए, सुप्रीम कोर्ट है याद रह जाए, ईयर याद रह जाए, उतना ही कोर्ट को दो, एज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, बस खत्म. मेरा मकसद ये होता है कि आपको मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स दे दूं. आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए. आप कितना रिटेन कर पाओ और कितना रिप्रोड्यूस कर पाओ वो अलग बात होती है. आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, पर मैं बट अगर मैं ही आपको नहीं दूंगा तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी. तो दिस इज व्हाई माय ड्यूटी इज टू गिव यू द बेयरेस्ट पॉसिबल, जो हम बिल्कुल जड़ तक जाते हैं. आई हैव टू गिव यू द बेसिक्स. ओके, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. The balance of convenience is the third principle. If the court is satisfied that the balance of convenience lies in favor of the applicant, तभी temporary injunction मिलेगा. What do we mean by balance of convenience? Now, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 5 नंबर का सिर्फ आ जाएगा balance of convenience, बस, और क्वेश्चन आ जाएगा. तो लिख लीजिए, this expression means that the hardship caused to the applicant by refusal of injunction shall be greater than the hardship caused to the opponent by grant of injunction. मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में समझाया, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं. बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है? जब मैं आपको इंजंक्शन का ऑर्डर दे रहा हूं, एक को फायदा और एक का नुकसान है, तो अब अगर मैं रिफ्यूजल कर दूं तो आपका नुकसान ज्यादा है. तो हमेशा दोनों का फायदा और नुकसान देखना है. तो अगर मैं आपको मना कर देता हूं इंजंक्शन से, तो क्या आपका लॉस ज्यादा है कि देने से उसका लॉस ज्यादा है? ये बेसिस होता है. तो प्लीज रिमेंबर, जब भी मुझे ऑर्डर देना है तो मुझे ये देखना है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो मांग रहा है उसके फेवर में है. कि अगर मैं नहीं देता इसको इंजंक्शन का ऑर्डर तो इसका नुकसान कहीं ज्यादा है, और अगर मैं दे देता हूं तो इसका नुकसान, तो डिफेंडेंट का नुकसान कम है इसके नुकसान से अगर मैं ना देता तो. That's how we read balance of convenience.
So basically, the assessment is of comparative inconveniences. The assessment is of comparative inconvenience, which is likely to be caused by grant or non-grant of an injunction. So balance of convenience किसके फेवर में होनी चाहिए? The balance of convenience lies in favor of the party which is to be inconvenienced more. जिसका ज्यादा नुकसान होगा उसके फेवर में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होता है. हाउएवर एक चीज बहुत अच्छी बताई सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में. काशी मठ संस्थान वर्सेस श्रीमद सुहिंद्रा SUHNIDRA तीर्था स्वामी. श्रीमद SRIMAD सुहिंद्रा SUHINDRA तीर्था TIRTHA स्वामी 2010 सुप्रीम कोर्ट. In काशी मठ संस्थान versus श्रीमद सुहिंद्रा तीर्थ स्वामी 2010 Supreme Court, the Honorable Supreme Court held, sometimes even if the balance of convenience is in favor of a party and the party fails to prove that there is a prima facie case, तो फिर भी चाहे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फेवर में भी हो तब भी आप उसको इंजंक्शन नहीं दोगे. यानी कि ये जो है प्राइमा फेशी केस, ये ओवरराइड करेगा सब चीजों को. अगर प्राइमा फेशी केस ही नहीं है तो इधर नहीं जाओगे आप. तो इसी इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि नो डाउट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, बट देन इट वुड बी सबसर्विएंट to the fact whether a prima facie case is made up or not. If no prima facie case is made up, then even if a balance of convenience is in your favor, फिर भी आपको injunction नहीं देना चाहिए. अब I hope everybody's understood these three principles. 20 marks का क्वेश्चन है, पूरा आएगा ये इंटरव्यू प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन उठा कि ये जो प्रिंसिपल हैं यही तीन है कि और भी हो सकते हैं. आर दीज थ्री प्रिंसिपल्स एग्जॉस्टिव इन नेचर और कैन देयर बी मोर देन दीज थ्री प्रिंसिपल्स? ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने 2006 में. एम गुरुदास वर्सेस रस रंजन, मैंने पहले भी कोट किया. एम गुरुदास वर्सेस रस रंजन 2006 सुप्रीम कोर्ट. ये याद रखनी है, ये वाली जजमेंट आपको रट्टा मारनी पड़ेगी क्योंकि ये हमें बता रहा है कि इन तीन प्रिंसिपल्स के अलावा भी हो सकते हैं. ओके, सो इन एम गुरुदास वर्सेस रसरंजन 2006 सुप्रीम कोर्ट, इट वाज हेल्ड दैट दीज थ्री प्रिंसिपल्स, दो बेसिक, आर नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर. अदर ग्राउंड्स may also be important. For example, delay in asking relief, suppression of material facts, यानी कि मेला फाइडी आप मांग रहे हो, compensation to the defendant in respect of the property, seriousness of the question which has to be tried, furnishing of a security by the plaintiff in case the suit is dismissed. सूट डिसमिस हो गया, इसने तो करा दिया उसको, तो 4 साल तंग करता रहा, बाद में आना बंद हो गया, डिसमिसल हो गया, तो श्योरिटी उसने कोई दी है, सिक्योरिटी दी है प्लेंटिफ ने, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है. कॉन्डक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, क्या पता वो बार बार अपना स्टांस चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं जो डिटर्मिनिंग हो सकती हैं. तो ये तो बेसिक है, नो डाउट, ये तीन तो बेसिक हैं, पर और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो डिटर्मिनेशन में मदद करें. तो ये तीन प्रिंसिपल्स नो डाउट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पर ये एग्जॉस्टिव नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट को अब
नेचुरली उनका माइंड बनाने में या निकालने में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक चीज हमें याद रखनी है, जब मुझे ये राइट मांगना है, आई शुड टेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने केस आया था कि जहां मैंने रिलीफ ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन बहुत देर बाद मांगा, सोता रहा मैं, एंड में जाके जागा, तो कैन दिस बी अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल? बॉम्बे हाईकोर्ट सेड यस, आई विल कोट दिस जजमेंट। रेखा मारोटकर MAROTKAR, रेखा मारोटकर वर्सेस RB खडगी KHADGI वर्सेस RB खडगी 2007 Bombay High Court. The relief of injunction is an equitable relief, and plaintiffs who are negligent and who sleep over their rights are not entitled to any equitable reliefs. So जहां negligent है वो या सो रहे हैं अपने राइट्स, वहां उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए। I hope everybody is clear till now. We've run out of time today. This was all a very, very important topic. इसमें काफी कुछ आप जो मैंने आपको लिखवाया और स्पेसिफिक रिलीफ में भी इंपोर्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो इंजंक्शंस हैं वहां पे प्रिंसिपल्स इंजंक्शंस के सेम होते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको दिए हैं। Most of them are governing temporary injunctions, but then you can always import some matters into the Specific Relief Act also. Fine, we'll take it up from here tomorrow. Thank you. God bless.